Today, the main topic of my lecture is types of endocytosis. There are three types of endocytosis: phagocytosis, panocytosis, and receptor-mediated endocytosis. Phagocytosis, it is the process by which the plasma membrane surrounding and engulfing substance plasma membrane surround करता है और engulf निगलता है substance by form में phagosome. phagosome की form में vacuole found around a particle. vacuole जो है बनता है पार्टिकल्स के गिर्द अब्जॉर्ब बाय फिगोसाइटोसिस अब्जॉर्ब्ड होते हैं फिगोसाइटोसिस की फॉर्म में। इट इज़ यूज बाय इनग्लूफिंग लार्ज ऑब्जेक्ट, ये जो है इनग्लूफिंग करते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट को, सच एज इनग्लूफिंग प्रे फॉर अमीबा, इनग्लूफ करते हैं प्रे ऑफ अमीबा एंड बैक्टीरिया बाय वाइट ब्लड सेल्स। फिगोसाइटोसिस उसके बाद ये जो है डायग्राम के अंदर दिखाया गया बाहर वाले माइक्रोब्स हैं सोडोपोडिया, उभरे हुए मैक्रोफेज है, बड़ी फेज वैक्यूल्स हैं, उसके बाद लाइसोसोम्स कंटेनिंग ये एंजाइम्स हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस किस तरह के होते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए चेल्ट्रेंस मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसे कहा जाता है चेल्ट्रेन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हार्मोन अदर प्रोटीन मेटाबोलाइट्स आर ऑब्जॉर्ब, हार्मोन और अदर प्रोटीन जैसे के मेटाबोलाइट्स ऑब्जॉर्ब होती हैं बाय द सेल्स बाय फॉर्मिंग इनवर्ड बडिंग, ये फॉर्म करते हैं इनवर्ड अंदर की जानिब जो है बडिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच कंटेन स्पेशल रिसेप्टर, ये जो है कंटेन करते हैं स्पेशल रिसेप्टर ऑन इट फॉर द सब्सटेंस टू बी ऑब्जॉर्ब, सब्सटेंस जो है ऑब्जॉर्ब होते हैं। दिस रिसेप्टर आर यूज एज ए लेजेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स, से कहा जाता है लेजेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स। उसके बाद पाइनोसाइटोसिस, एक्स्ट्रा सेलर जो है फ्लूइड सब्सटेंस होने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और ये जो है बाहर वाला वेसल्स है। उसके बाद सेल्स जंक्शन, इंट्रा सेलुलर्स ब्रिज जंक्शंस बिटवीन द सेल। Cell junction is a type of structure that exists in the tissue and organs, ये जो है टाइप स्ट्रक्चर का जो एग्जिस्ट होता है टिश्यू और ऑर्गन्स की फॉर्म में। इट इज़ मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्स, ये मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्स है दैट अकर बिटवीन द नेबरिंग सेल, ये जो अकर होते हैं नेबरिंग सेल में, विच हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन दम, ये जो है मदद करते हैं कम्युनिकेशंस बिटवीन दम। देयर अकर स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन, ये जो अकर होते हैं ख़ास मॉडिफिकेशन में ऑफ द प्लाज्मा ब्रेन की फॉर्म में एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट फॉर्मिंग से फंक्शंस और ब्रिज बनाते हैं, फंक्शन और ब्रिज। कोट प्रोटीन्स प्लाज्मा ब्रेन रिसेप्टर लेजेंड coated pit, coated vessels, a coated pit and a coated vessels found draining a receptors mediated endocytosis TEMS. It attracts the substance strobes absorbed by forming a membrane depression, form करते हैं membrane की depression और coated pit on the membrane. When sufficient molecules have been attracted the pocket, sufficient molecule attract होते हैं pocket will pinch off होते हैं forming a coated vessels in the cytoplasm. Inside the cytoplasm, the vascular shade of these coated and then fuse with others membrane bound structure, releasing these proteins. Uptake होती iron की cholesterol by the cell occur by receptor mediated endocytosis. उसके बाद receptor mediated endocytosis, it is also four kinds of junctions occur in vertebrate. चार तरह के जंक्शन जो आकर होती है वर्टिब्रेट्स में, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेमोसोम्स। प्लांट सेल्स हैव स्पेशल जंक्शंस कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, खास जंक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दिया जाता है। टाइट जंक्शन आल्सो नॉन एज ओकोलोडिंग जंक्शन इज द closest contact between adjacent cells providing a tight seal preventing the leakage of molecules across the cell. It is found just beneath the apical region, ये जो है just beneath नीचे है apical region. Portions of cell exposed to lumen, portion जो है cell का exposed होता है lumens is apical cells, सबसे ऊपर वाले cells of cell around the cell circumstances के sense there are tight seals
लिमिटिंग द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है लिमिटिंग है पैसेज जो है मॉलिक्यूल्स का, रास्ता मॉलिक्यूल्स एंड आयन मोस्ट मटेरियल एक्चुअली इंटर द सेल्स, ज़्यादातर मटेरियल जो है एक्चुअली इंटर होते सेल्स बाय डिफरेंस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द टाइट जंक्शंस इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, टाइट जंक्शन जो है बनती है प्रोटीन्स कॉल्ड Calodins and aquilidins, which are arranged in strands along the lines of junctions, creating the tight seals. Create करते हैं tight seals. It is usually seen in epithelial cells, duct of livers, pancreas, and urinary bladders. उसके बाद ये डायग्राम है apical surface adherence junction. There are protein complexes that occur at cells to cell junction in apicals, epithelial and endothelial tissue, which provide strong mechanical attachments to strong mechanical attachment जो है between adjacent cell mate is built from protein cadherins and catenin. The cytoplasmic phase of cells has actin filament, and these actin bundles of one cell joins with the actin bundles of neighboring cells provide a strong mechanical attachment. Strong mechanical attachment provide that the space between the neighboring cell membranes are about 20 to 25 nanometer. This kind of junction is seen in heart muscles, and they hold the cardiac muscles together when it expands and contract on the birth cell. One cell to plasma membrane actins filament ensuring protein cadherins dimers. उसके बाद gap junctions, they are specialized intracellular channel which are brought into intimate contact with a gap of about 2 to 3 nanometer between the adjacent cells. They directly form a connections between the cytoplasm of adjacent cell. So the molecules, ions and electric impulse pass directly from cell to cell, cell से cell की जानिब ये जो है गुजरते हैं. उसके बाद the intracellular channels are like hollow cylinders. Intracellular channel like hollow cochlear cylinder, and they are called connexons. These connexons are made up of protein called connexins. The two adjacent connexons form a hydrophilic channels of 3 nanometer diameter, and it is through these channels that the ions and the molecule pass. Gap junction is seen in muscles and nerves in heart tissue, help in regular heartbeat in the brains. It is seems in cerebellums, and it will help in muscular activity. Help करते हैं muscular activity में. Close and opens plasma membrane, intracellular space 2-4 nanometer space, hydrophilic channel. उसके बाद गैप जंक्शन, इंट्रासेलुलर स्पेस, हाइड्रोफिलिक चैनल 2.7 नैनोमीटर स्पेस, कनॉक्सेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद डेमोसोम. देर आर इंटरसेलुलर junction which form a strong adhesion between adjacent cells. It enables the cell to resist and stress. The intermediate filament present intracellular of adjacent cells join with the each other to form the strong adherence so that they can function as a single unit. And they are usually seen in organs subject to mechanical stress like skin, heart, neck of uterus. उसके बाद प्लाज्मोडेस्मेटाइटिस टाइप ऑफ जंक्शन सीन इन प्लांट. ये टाइप ऑफ जंक्शन है जो प्लांट में देखा जाता है. दीज आर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स. साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स के साथ ये जो है कनेक्ट है. इट पेनिट्रेट थ्रू द सेल्स वॉल एंड इट प्रोवाइड एन ईजी रूट फॉर मूवमेंट ऑफ आयन. ईजी रूट जो है देते हैं मूवमेंट ऑफ आयन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन्स. और ये डायग्राम है जिसके अंदर जो है प्लाज्मोडेस्मेटा इंटरसेलुलर जंक्शन दिखाया गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाले स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स स्मूथ और जो मिडल लैमिला है. प्राइमरी सेल वॉल्स फिगर 1, डेस्मो ट्यूब्स. उसके बाद सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं. सेल मैक्रोफाइब्रस है, पैक्टिन्स है,
क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस है प्लाज्मा membrane